in Zostel Sisu Valley. So we opted for the couple room. Zostel basically has dorms for solo travelers or group travelers, but since we are a couple we opted for this room and it's amazing. We got it for 2400. This is the deluxe room and it's really, I mean, it has all the basic facilities. It has huge spacious windows and we have a working table as well. Let me show you the best part, the balcony. Isn't the view just gorgeous? I think Zostel started out with Spiti Valley, Kaza, and slowly their business grew and then they have a lot of Zostel options at a lot of places in India now, and this seems to be a new one. It's really nice. Let me show you the bathroom. The bathroom is sparkling clean. And we have geyser for the toilet as well. Not sure about it. We'll taste in the morning. And there is this huge mirror which is an absolute must without any distraction or table, so that we all can get ready beautifully. And a spacious king size bed, absolutely comfortable. This is actually a very offbeat location, Sisu village, but because of Zostel we are getting to stay at such a nice, clean, spacious location, so that's really amazing. ये हॉस्टल का लोकेशन ट्रेस करना भी काफ़ी आसान है। जब आप अटल टनल्स क्रॉस करके सिसु वैली में एंटर करते हो, जस्ट नेक्स्ट टू इट आपको रोड साइड में ही इसका बोर्ड लगा हुआ दिखेगा, हॉस्टल करके, और भी कुछ लिखा हुआ है शायद बेयर करके कुछ तो नाम है, मैं आपको बाद में बताता हूँ वो क्या है। सिसु हॉस्टल पहुँचने के बाद हमने लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया, एंड नाउ वी आर हेडिंग आउटसाइड टू see the Sisu waterfall and the lake. Hopefully it won't get dark early. उससे पहले हम लोग को एक्सप्लोर करके लेना है. The weather is absolutely stunning. Are you ready? Almost. Just tying my laces. हमने सिसु वाटरफॉल देख लिया और अभी यहाँ पे बहुत जोरों की हवा चल रही है, धूल मिट्टी है सभी जगह पर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स ऑल्सो रेनिंग यहाँ पे इन दिस एरिया, एंड यहाँ पे पूरा ब्लू स्काई हम लोग आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे सारा ब्लू स्काई है, एकदम क्लियर। यहाँ पे सिसु वाटरफॉल है एंड ऊपर सारे ग्रे क्लाउड्स हैं और बारिश भी हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो सिसु का स्टे यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे हम लोग निकलते हैं राशेल के लिए। मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप खिली हुई थी, अभी वापस से क्लाउड्स जमा हुए हैं। यहाँ के मैनेजर या ओनर से बात किया मैंने थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि राशेल का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहेगा क्योंकि वो सिसु से थोड़े अल्टीट्यूड नीचे है। अभी देखते हैं वहाँ पे जाके क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे गोभीज़ है, गोभी की बहुत बड़ी बड़ी खेतियाँ है यहाँ पे। ये देखो सब लोग यहाँ पे बस गोभी का काम कर रहे हैं। यहाँ पे शायद मिक्स वेज में मेजॉरिटी गोभी रह सकते हैं, पता नहीं, हम लोग ने तो मंगाया नहीं।
अभी हम लोग निकल रहे हैं राशील विलेज के लिए. होपफुली द रोड इज ग्रेट. सो हम लोग ने थोड़ा हॉल्ट लिया यहाँ पे. शायद ये तंदी एरिया ही है. और यहाँ पे तंदी का ब्रिज भी दिख रहा है. यहाँ पे हम लोग थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे. हाथ की हालत पूरी अरे यार फ्रीज हो गए. जो ग्लोव्स लिए थे मनाली में वो तो कोठी में गिर गए इधर. तो यार अभी नए लेने पड़ेंगे, कोई बात नहीं. बट द वेदर इज क्वाइट कूल. डिडंट एक्सपेक्टेड इन September, but fortunately there is no sign of rain. So yeah, that's what. Now we are having some food to heat our body, and then we'll move ahead to Rashil. सो गाइज हम लोग ने मोमोज ब्रेक लिया है. मैंने लिए हैं मटन मोमोज क्योंकि चिकन अवेलेबल नहीं है. मेरे को मटन पसंद है एंड इसलिए लिए है वेज मोमोज. लेट मी टेस्ट. वेज वन. वांट द मटन. माय गॉड, भ्रष्ट हो गए तू. तो अभी मैं मटन मोमोज टेस्ट कर रही हूँ फाइनली. ठंडे मौसम में चाय, मोमोज. तंडी ब्रिज में बहुत सारी ठंडी लग रही है. अभी अचानक से बारिश होने लगी है एंड वी थॉट वी शुड टेक अ ब्रेक. सो वी आर वेटिंग इनसाइड दिस शेड. हियर इज आवर प्यारी एक्सपल्स. यस, घेऊ का आतमध्ये? अभी आके जो रास्ते हैं ना, आई कैन नॉट इवन टेल हाउ थ्रिलिंग दे आर. पहले तो बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है एंड देयर आर सो मैनी टर्न्स एंड लूप्स. ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक रास्ता है. थैंकफुली आवर मोटरसाइकिल इज a dirt bike sort of, so that's fine. Now it's time to go. It's just few minutes from our homestay in Rashil. This is one of those rough patches of the journey.